हेलो एंड वेलकम बैक टू द आफ्टरनून सेशन ऑफ लाइव ट्रेडिंग विद ट्रेड जीनी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुधीर एंड वेलकम बैक एंड लेट्स जॉइन इन एंड चेक कि आफ्टरनून सेशन में ट्रेड जीनी आज आपके लिए क्या लाने वाला है। सो जो इस हफ्ते की या इस घड़ी की जो पहली खबर है वो है ये कि द यूरोपियन मार्केट्स हैव ओपनड अप इन अ मिक्स्ड सिग्नल एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड बी एक्सपेक्टिंग अ मिक्स्ड और अ sideways track in the Indian stock market. So that is what I am assuming, but what the update here is that the European market have opened up in a mixed. So quickly let's go and see कि जो Indian stock market है उसका इस वक्त का हाल क्या है and how exactly it is going to impact our markets. So let me quickly open the Nifty chart on your screen right now और मैं आपको दिखाऊं कि ट्रेड जीनी अब आपके यहाँ पे क्या कहता है। तो निफ्टी का चार्ट देखिए, तो निफ्टी कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि जो हमारा जो बाय कॉल था उसके साथ चल रहा है और अभी भी यहाँ पे बाइंग परसेंटेज बनी हुई है विच यू कैन सी। सो आप देखेंगे कि जो बाइंग परसेंटेज है वो फिलहाल यहाँ पे 59% की है, बट जो बाइंग मोमेंटम है वो आपका सवेरे से बरकरार है। सो यू शुड ऑल्सो बी ऑन द बाइंग साइड ऑफ निफ्टी एंड प्लीज क्विकली नोट डाउन द टारगेट्स। अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो निफ्टी के बाइंग साइड के टारगेट्स नोट कीजिए और बाइंग साइड पे आप बने रहिए। सो लेट्स ओपन अप बैंक निफ्टी और ये देखिए बैंक निफ्टी का हाल आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में फिलहाल इस वक्त एक बाय कॉल है जो 11 बजे करीब आई थी ट्रेड जीनी की एंड सिंस देन इट इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग नोट। इस वक्त बाइंग परसेंटेज इज अराउंड 88%। सो आई थिंक आप भी यहाँ पे बाइंग साइड पे बने रहें। तो ये सवेरे की बाइंग कॉल है। टारगेट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नोटेड है, आप बाइंग साइड पे बने रहिए, टारगेट नोट कर लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट या अपने पोजीशन के हिसाब से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हमारी नज़र बनी रहेगी इस वक्त बैंक निफ्टी के ऊपर और देखते हैं कि कैसे यूरोपियन मार्केट्स का जो ओपनिंग है उसका खासा असर हमें यहाँ देखने को मिलता है कि नहीं। एंड इफ द यूरोपियन मार्केट्स आर रिकवरिंग और इफ द रिकवर देन हाउ एग्जैक्टली आवर मार्केट्स आर गोइंग टू follow back that trend. Okay, so we'll keep our eyes on this. Gold consistently सुबह से देखिए आप यहाँ पे सवेरे से यहाँ पे एक सेल कॉल है, इट इज ऑन अ फॉलिंग ट्रेंड राइट नाउ। इफ यू सी इट इज ऑन अ साइडवेज ट्रेंड। जैसा कि मैंने बताया आपको हमेशा कि गोल्ड और कमोडिटी की ट्रेडिंग वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट टू डू इन इवनिंग सेशंस आफ्टर 6 PM वेयर वी एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी सुपर्ब एक्शन। सो फिलहाल जो राइट नाउ द पोजीशन है वो है ये साइडवेज चल रहा है गोल्ड, सवेरे से ही ये सेल जोन पे है। Be on the selling side, note down the targets of gold so that it is easier for you to understand and navigate, and we will see if it improves in the later part of the show. And let me quickly move on to crude oil and show you the afternoon session details about crude oil. And here we go, crude here आपके सामने and you can see कि crude में we have a buy call, green arrow, green Heiken-Nishi, and buying percentage is more than 73%. So it's a good sign for crude. Quickly note down the targets for crude 3059 and 3076, the upper side or the green or the buying side targets for crude. So please note down the targets for crude. Be on the same side. If you have already taken a position, maintain the buying position. Note the SL and also ensure that you also note down the targets for your exits. सो ये था अपडेट हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और क्रूड का आफ्टरनून सेशन में। तो फिलहाल इस वक्त आई डोंट सी अ मच इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन मार्केट्स, इट इज स्टेडीली फॉलोइंग द सेम स्ट्रीम जो आपने आफ्टरनून यानी 11 बजे के बाद देखी थी। तो वही चीज़ चल रही है। तो स्लोली हमारी नज़र बनी हुई है यहाँ पर, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट मुझे यहाँ देते जाइए चैट में सो दैट आई कैन शो यू एंड
explain you what exactly is happening. Yes, Anandji, Grasim, Bank Nifty level. Yes, I just showed you the Bank Nifty level. Right now on your screen you have the Bank Nifty. It is on a buying side, but currently you can see it is running on a 50-50 sideways note. Note down the targets for the buying side for Bank Nifty. Current position is it is on a sideways note with a strong sellers. 46% के यहाँ पे sellers हैं. That's the reason why they're taking the price down and to a sideways track. So ये आपके सामने यहाँ पर मैंने रखा हुआ है targets आपका बैंक निफ्टी का. Know the targets down and you would be able to understand how exactly it is faring and how far it is going to go. So current position is Bank Nifty is at around 54% buying and 46% strong selling side. So let's just wait. If we haven't taken any new positions, तो थोड़ा इंतजार कीजिए. Buying की position अगर 70 के ऊपर जाती है तो you can dig in and start collecting the points as per the targets. अगर यहाँ पे selling pressure आता है तो we should be expecting a new sell call from Trade Genie. So in both conditions हमें यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना होगा. निफ्टी में और ये देखिए राइट नाउ वी हैव अ वेरी ह्यूज सर्ज डाउन ट्रेंड में. यहाँ पे एक नया फ्रेश एरो बनता हुआ दिखा है निफ्टी में. आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त रेड एरो आया है सेल कॉल के लिए एंड वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्मिंग अप. 62% सेलिंग है. सो इफ एट ऑल इट कंटिन्यूज देन वी शुड बी एक्सपेक्टिंग द सेल प्राइस एंड द सेलिंग टारगेट्स ऑल्सो फॉर निफ्टी. एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे शायद बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है. तो शायद यहाँ पे अभी हमें पोजीशंस अभी नहीं लेनी है. थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कंट्रोल रखिए और आप संयम भी रखिए ताकि आपको पता हो कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल टेक अप अ नाइस ट्रेड. So just hold on to it. I think everything, if the Bank Nifty starts falling, we should be seeing the stock market reciprocating. So again देखिए निफ्टी में जो यहाँ पे सेल की कैंडल बन रही थी रेड एरो, it has just retracted back because ये जो selling percentage है, simple solution है, selling percentage has not breached the 70% mark. So it is a very crucial time right now. So don't take up a trade in haste. जल्दबाजी ना करें. आपने मुझसे अभी कुछ पूछा यहाँ पे ग्रासिम. तो येस आई विल ओपन अप ग्रासिम और मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड जीनी ग्रासिम के बारे में क्या कहता है. तो बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है इस वक्त. जस्ट होल्ड ऑन एंड इंश्योर दैट वी आर ऑन द स्मार्टर साइड. ओके, डोंट टेक अप एनी रॉन्ग ट्रेड्स, डोंट जंप इनटू रॉन्ग ट्रेड्स. तो ये देखिए ग्रासिम में यहाँ पे बाय कॉल है मिस्टर आनंद. आप देख सकते हैं एक फ्रेश बाय कॉल है. टारगेट्स नोट कीजिए आप. 783 इज टारगेट 1, 787 इज टारगेट नंबर 2 with buying percentage at around 79-80%. So please quickly note down the targets for Grasim on your screen, steadily going upwards. आपने ग्रासिम के टारगेट्स नोट कर लिए हैं. आई रियली होप दैट 86% स्ट्रॉन्ग सेलिंग है आप ग्रासिम की. तो फटाफट से आप नोट कीजिए ग्रासिम के टारगेट्स सो दैट यू नो what exactly is happening and you should be on the right side of trading with Trade Genie. चलिए चलते हैं हम पावर ग्रिड में. तो एक सवेरे से कल से ही यहाँ पे ट्रेड जीनी का बढ़िया सा सेल कॉल आया हुआ है और देखिए आप यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पे जो है आपका एक धांसू एक सुपर स्ट्रॉन्ग बहुत लंबा बेरिश कैंडल यहाँ बन चुका है. इट इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग क्लोजर टू टारगेट नंबर 1. सो एवरीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन पावर ग्रिड कैन लुक एट द टारगेट्स एंड स्टार्ट कलेक्टिंग पॉइंट्स. डाबर में जो है हमारा बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है. टारगेट नंबर 1 अचीव हो चुका था सवेरे से ही and we have made good money. TCS also, it is currently on a sideways position but on a buying track. आज जो हमारे IT के स्टॉक्स थे वो मैंने सवेरे ही डिस्कस किया था आप लोगों से कि IT सेक्टर के सारे स्टॉक्स आर ऑल ऑन very strong positive and one by one each of them as I predicted, as I said,
each of them in IT company, they have gone past their targets. Okay, Infosys, Wipro, Techem, TCS, everybody has touched their targets and they have made some good money. In the morning itself, I have told you that the IT sector was getting a nice favor and it just boomed up, and the banking sector was on a negative trail. तो देखते हैं वो आफ्टरनून सेशन में कौन सी मोमेंटम लेती है and what side of the trade do we fall on. बैंक निफ्टी इज, आप देखेंगे कि यहाँ मोरलेस जो है बैंक निफ्टी का जो आज के दिन का जो हाल था साइडवेज ही है। जो इसका आज का जो हाई था 24,445, उस प्राइस को इसने ब्रेक नहीं किया है अभी तक, उसी प्राइस में ही इट हैज़ बीन डांसिंग अराउंड। और जो मैं एक बार दिखाऊं आपको कि जब तक ये अगर बाइंग साइड पे जाना है तो ही हैज़ टू ब्रीच 24,445 का प्राइस रेंज टू गो अपवर्ड, एंड दैट इज़ वाई सवेरे से ही सेलर्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने एंड दे हैव टेकन द प्राइस टू अ साइडवेज ट्रैक। निफ्टी जो आज बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, आज के दिन का जो हाई लिया था उसने 11,940, उसके बाद इट कुड नॉट गो बियॉन्ड दैट प्राइस, उस प्राइस को टच करके वापस आया है एंड करेंटली रनिंग एट 11,900 एंड वी जस्ट सॉ रेड हाइकनिशी फॉर्मिंग हेयर। तो लेट्स होप यहाँ पे निफ्टी भी देखिए आपका जो है 50% पे साइडवेज ट्रैक पे आया हुआ है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रूशल टाइम, डू नॉट इन्वेस्ट योर मनी जस्ट लाइक दैट, ओके, इन सम रॉन्ग रैंडम स्टॉक्स. Hold on to your horses, hold on to your stocks and investment. If you really want to know any good stock, let me know, I will show you the live levels, and with that आप यहाँ पे एक बढ़िया कॉल ले सकते हैं। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, अपने स्टॉक्स के बारे में मुझसे पूछते रहिए एंड आई विल शो यू, बिकॉज राइट नाउ मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेंडिंग इन अ साइडवेज ट्रैक। सो कोई भी सॉलिड डायरेक्शन नहीं दिख रही है, ना ही अप ना ही डाउन। सो दिस इज़ वेरी important for you to remember कि ऐसे में कोई गलती आपने नहीं करनी है। If you do any kind of such random mistakes, it can be prove very costly to you. Hold on, क्योंकि मार्केट अभी आफ्टरनून सेशन की शुरुआत हुई है और जैसा मैं रिपोर्ट्स ले रहा हूँ कि यूरोपियन मार्केट्स दे हैव ओपनड अप इन अ मिक्स्ड सेगमेंट। सो उसी का सीधा इंतज़ार और उसी का सीधा इम्पैक्ट आप यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में देख सकते हो कि इट हैज़ picked up the sideways notion and we are waiting for a confirmation or a good direction कि if it's really going to follow the sell calls or it is going to go with the buy calls. So जो भी direction होगी मैं आपको बताऊंगा and based on that you should be able to take up a nice trade. तो एक हो या दो हो, जितनी भी ट्रेड हो, जितनी भी लेना चाहेंगे ज़रूर लें, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलने के बाद। Dabur is over, so I will close Dabur. TCS buy mode पे ही बनी हुई है। Techem is over, both targets achieved. I will close Techem. Pharma sector is again sideways. It was a buy call. आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर तक गया and 814 was the day's high. And currently you can see very super strong sellers जो यहाँ पे आए हुए हैं आरो फार्मा में and they're taking the price down. So let me check कि इस वक्त आफ्टरनून सेशन में इज एनी सेक्टर गेटिंग फेवर्ड एंड डू वी हैव एन ऑप्शन टू पिक एनी गुड स्टॉक। फार्मा इज मिक्स्ड, FMCG is mixed, banking is also mixed. So yes, I don't see a clear majority in any direction in any of the sectors. So that means we would have to go for इंडिविजुअल स्टॉक्स, बिकॉज अगर हमें कोई ढंग के यहाँ पे प्रॉफिट निकालनी है तो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट अ प्रॉपर स्टॉक दैट इज वर्किंग इन आवर डायरेक्शन एंड गिविंग अस सम बेनिफिट्स आउट हियर।
क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्टर में मुझे खासा डायरेक्शन मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर हैविंग अ मिक्स सिग्नल ऑफ रेड एंड ग्रीन, अप्स एंड डाउन, सेल जोन, बाय जोन बने हुए हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल पिकिंग अप स्टॉक एंड डोंट गो बाय द फ्लो। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये जो टाइम है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। तो इस लॉस से लेने के बजाय इट इज़ बेटर टू बी स्मार्टर एंड नॉट ट्रेड, बिकॉज जब मिक्स्ड मार्केट, चॉपी मार्केट हो तो आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है। हमें एक बढ़िया से सिग्नल का इंतज़ार करना है, बढ़िया से ट्रेंड का इंतज़ार करना है। और जिस ट्रेंड में अगर आप बने हुए हैं और आप जानना चाहते हैं टारगेट्स, तो फटाफट मुझे अपनी स्क्रीन पे चैट करें। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप SMS चैट कॉल्स कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू get your personalized copy of Trade Genie installed on your home PC. Okay, so do let us know, and our executives are going to call and explain you about the offers or the information that we have for the Trade Genie software. So coming back to this Axis Bank, buy mode है, लेकिन फिलहाल market is sideways. SBI also यहाँ पे sell call है, but it is on a buying trend. सो बहुत ही हॉप कॉच यहाँ पे चल रहा है, मिक्स मैच सिचुएशन चल रही है, एंड वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो लेट मी ओपन अप अनदर रिक्वेस्ट। ग्लेनमार्क इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम मिस्टर सूर्या, सो आई विल ओपन ग्लेनमार्क फॉर यू। तो ये देखिए, फॉर अ चेंज वी हैव अ बाय कॉल इन ग्लेनमार्क। बाइंग साइड है ट्रेड जीनी की, यहाँ पर बाइंग जोन बना हुआ है। टारगेट्स नोट कीजिए आप ग्लेनमार्क के 489 एंड 493 रेस्पेक्टिवली, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 विद अ स्ट्रॉन्ग 71% बाइंग साइड। सो इफ यू आर ऑन अ बाइंग साइड मिस्टर सुरेश, सो बी ऑन द बाइंग साइड एंड नोट डाउन द टारगेट्स ऑन योर स्क्रीन फॉर ग्लेनमार्क। सो बहुत फटाफट आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज डालना शुरू कीजिए, ताकि मैं आपको फटाफट दिखाऊं और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। कश्मकश या डाउट्स में ना रहें, चार्ट्स पे लाइन ड्रॉ करते ना रहें, आप खामखा के टेंशन्स ना लें। आपका सारा काम ट्रेड जीनी यूं से 1 सेकेंड में कर देगा। यू जस्ट नीड टू आस्क, यू आस्क एंड इट्स राइट देयर। ओके, इट इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, सो वी विल शो यू। बिकॉज फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई भी स्टॉक मज़ेदार पोजीशन में नहीं नज़र आ रहा वेयर आई कैन कॉन्फिडेंटली एंटर एंड टेक अप अ ट्रेड, बिकॉज एंटायर मार्केट इज गोइंग ऑन अ choppy or a sideways direction. So that is the reason why we don't have a clear majority in the upper side or on the lower side. So we have to be very very careful in picking up stocks. Don't do any silly mistakes and don't end up losing big money. टाटा केमिकल की रिक्वेस्ट आई है, मिस्टर मीर अली, टाटा केमिकल्स। सो ये रहे आपके सामने मिस्टर मीर टाटा केमिकल्स का चार्ट, और यहाँ देख सकते हैं आपकी ट्रेड जीनी ने आपको बढ़िया सी बाय कॉल दी है। एंड करेंटली आफ्टर द स्लॉपी मार्केट राइट नाउ इट इज़ ऑन अपवर्ड ट्रेंड। 87% की स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है टाटा केमिकल्स में। टारगेट नोट कीजिए आप, 322 एंड 323 रेस्पेक्टिवली इज द टारगेट 1, टारगेट 2 फॉर टाटा केमिकल्स। Be on the buying side if you are on the buying side, and if you haven't taken any fresh position, आप यहाँ पे ज़बरदस्त बाय कॉल ले सकते हैं टाटा केमिकल्स की। बने रहिए, टारगेट्स नोट कीजिए आप पहले। Yes, I will show you the Bharti Airtel targets on your screen. Just a moment. ओके, तो भारती एयरटेल, ये देखिए बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है आनंद जी। यहाँ पर भारती एयरटेल में जो हमारे ट्रेड जीनी के यूज़र्स हैं सवेरे से ही लगे पड़े हैं
और भारतीय एयरटेल की जो 398 की ओपनिंग थी, हमारा टारगेट था 411 का। आप देख सकते हैं आज के दिन का हाई था 413। सो यहाँ पे आप देखिए 15 पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत ही बढ़िया दिन था भारतीय एयरटेल के लिए, especially for trade genie users. They have made some bumper money already and they have booked all the profits. Profit booking zone भी खत्म हो चुका है. It has gone beyond our both the targets. So it is time for everybody to exit because it has been royally booked profit in Bharti Airtel since morning. 15 पॉइंट यहाँ पे आराम से आ चुके हैं और दोनों टारगेट्स खत्म हो चुके हैं। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जैसे ही दोनों टारगेट्स खत्म हो जाते हैं ट्रेड जीनी में, दैट स्टॉक इज डन फॉर द डे। सो सिमिलरली मिस्टर आनंद जी, यहाँ पे देखिए आपका भारतीय एयरटेल के सारे टारगेट्स ट्रेड जीनी ने आज पूरे करवा दिए एंड वी आर डन फॉर द डे इन टर्म्स ऑफ भारतीय एयरटेल। यस, सो आपके सामने यहाँ बंधन बैंक का चार्ट में लगाया है। मुझसे किसी ने पूछा है बंधन बैंक के बारे में। सो ये देखिए आपका अपडेट बंधन बैंक के लिए एंड आप देख सकते हैं कि सवेरे से ही इट इज़ ऑन अ सेलिंग जोन फ्रॉम एज पर ट्रेड जीनी, लेकिन मार्केट इतनी चॉपी है कि यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं और वो उन्होंने सवेरे से इस पूरे के पूरे प्राइस ब्रैकेट को जो है एक साइड ट्रैक पे रखा हुआ है। सेल कॉल है, लेकिन बायर्स सवेरे से निरंतर ही बायर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग बने हैं और ये जो आज का जो लोएस्ट था वो था 315 का और अभी तक ये 315 से नीचे नहीं गया है। ओके, सो वी जस्ट हैव टू वेट। अगर बंधन बैंक में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखिए, क्योंकि जब तक हमें यहाँ पे एक सॉलिड डायरेक्शन नहीं मिलती है तो वी आर नॉट गोइंग टू एंटर। टाटा केमिकल्स में जैसे मैंने बताया 90 यहाँ पे सुपर स्ट्रॉन्ग बाइंग बनी हुई है। आप बाइंग मोड पे बने रहें और अपना प्रॉफिट्स लेते रहिए। एंड वील मूव ऑफ टू औरो फार्मा में देखिए यहाँ पर बाइंग कॉल थी, लेकिन टारगेट्स जो बाइंग कॉल पे जाने के बाद यू कैन सी 814 वाज द डेज हाई टुडे और उसके बाद इट हैज़ कॉन्स्टेंटली कम डाउन। ओके, और आप देख सकते हैं कि करेंटली इट इज़ ऑन अ 91% स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइड। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है यहाँ पर एंड इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे बाइंग की कुछ खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो आई थिंक वी शुड बी एक्सपेक्टिंग अ नाइस रेड एरो हेयर। मैं आपको लोअर साइड के टारगेट बता देता हूँ पहले से। 794 इज टारगेट 1 and 788 is target number 2 for Oro Pharma. So anybody look interested in Oro Pharma, note down the targets because we are very soon expecting a nice red arrow or a sell call and we should start making some good money here.
सो आई विल कम बैक टू इट, बिकॉज जैसे ही ऑरो फार्मा में हमें यहाँ पे सेल कॉल मिलती है तो हम बढ़िया से हमें यहाँ पे अलर्ट मिल जाएगा ट्रेड जीनी का, और जैसे ही मुझे यहाँ अलर्ट मिलेगा मैं आपको टारगेट्स फटाफट से दिखा दूंगा एंड वी कैन स्टार्ट मिंटिंग दोज प्रॉफिट्स। ओके, तो इंतज़ार करते रहिए आप ऑरो फार्मा का, और बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको बढ़िया से टारगेट्स दिखाऊं यहाँ पर एंड आपको बढ़िया सा प्रॉफिट भी कराऊं। बैंक निफ्टी, निफ्टी अगेन इट इज़ स्टेडीली टेकिंग साइडवेज, और यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पे मुझे एक रेड एरो सा, निफ्टी में सॉरी, एक रेड एरो सा बनता हुआ दिखा था। एंड सो मार्केट अभी भी डिसिसिव नहीं है कि किस तरफ जाना है। ओके, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट अ राइट डायरेक्शन। और ये देखिए अभी एक मुझे अलर्ट आई है TCS में, यहाँ पे आपकी सेलिंग शुरू हुई है, सेलिंग परसेंटेज 72 है। तो फटाफट से ये फ्रेश टारगेट्स मिला है, आप नोट कीजिए, क्योंकि फ्रेश टारगेट्स ही है जो हमें चाहिए, और इस फ्रेश टारगेट का TCS में सेलिंग शुरू हो रही है, तो आप फटाफट से नोट कीजिए ताकि जैसे ही ये 70% से ऊपर चला जाए एंड वी शुड बी रेडी टू ग्रैब द बेनिफिट्स। तो सेलिंग स्टार्ट होने का अंदेशा है, एरो आया है हमारा, और ये जो हाइकन इशू रेड बनी हुई है, टारगेट्स नोट कीजिए आप TCS के। सो बने रहिए मेरे साथ, जल्दबाजी ना करें यहाँ पर आप, और देखें कि किस तरीके से जो है आपकी पोजीशंस बनी हुई है बैंक निफ्टी में मार्केट। ये देखिए निफ्टी में फिर से दो दो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड हाइकन इशू बन चुकी है, एरो आ चुकी है, सेलिंग परसेंटेज ऊपर जा रही है धीरे धीरे, एंड वी शुड बी रेडी टू ब्रेस आवर सेल्फ फॉर अ फॉल और अ बेरिश कैंडल टू फॉर्म इन निफ्टी। और जैसा ये अगर यहाँ पे कुछ होता है, TCS में भी यहाँ पे देखिए आपका एरो आ चुका है, रेड एरो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो जल्दी से नोट कीजिए TCS के टारगेट्स, ये सेलिंग पॉइंट पे जा चुकी है, कहीं आपसे चूक ना जाए ये प्रॉफिट्स आपका TCS का, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। नोट कीजिए आप टारगेट्स TCS के, इट इज़ गोइंग फॉर अ सेल जोन, इट इज़ ऑलरेडी ऑन ए सेल जोन। पॉइंट्स आप नोट कीजिए, टारगेट्स नोट कीजिए, ताकि यू शुड बी एबल टू मेक अ स्मार्टर डिसीजन। स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है ऑलरेडी, 2741 इज द सेलिंग प्राइस। क्विकली नोट डाउन द टारगेट्स फॉर TCS। One, it's already 2 o'clock and as I was telling you कि जो आपका आज सवेरे से जो हमारे IT के स्टॉक्स थे, दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल ऑन अ बाइंग साइड, ऑन अपर साइड। इन्फोसिस का चार्ट दिखा दूँ आपको कि इट हैज़ वेंट अप एंड ऑलमोस्ट टच्ड आवर टारगेट नंबर 1, एंड आप देख सकते हैं कि टारगेट नंबर 1 को टच करने के बाद डेज हाई था जो इसका 1144, सो क्लोज टू 28 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिए आज। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है इन्फोसिस में एक रेड एरो यानी कि सेल कॉल शुरू हुई है। ओके, सेलिंग जोन शुरू हुई है, सेलिंग परसेंटेज इज अराउंड 55%, सो होल्ड ऑन टू दैट ऑल्सो। ओके, इतनी जल्दबाजी ना करें, 70% पे आने का इंतजार कीजिए। सेलिंग परसेंटेज का टारगेट्स आप नोट कर लें भले,
बिकॉज टारगेट्स नोट करने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है एंड उसके बाद यू कैन टेक अप अ प्लंज और टेक अप अ डाइव द मोमेंट द सेलिंग परसेंटेज गोज बियॉन्ड 70। तो इन्फोसिस के ऊपर देख सकते हैं इस वक्त एक नया रेड एरो बनता हुआ, and we can see what is happening here. सेलिंग साइड का थोड़ा सा प्रेशर आया है कि जस्ट लेट मी चेक कि यहाँ पे एनी चेंजेस इन द मार्केट स्ट्रीम। बैंक निफ्टी भी देखिए यहाँ पर आपका सेलिंग पोजीशन जो आपका साइडवेज ट्रैक कंटिन्यूसली लेके चल रहा है एंड वी हैव दिस थिंग गोइंग ऑन वेरी वेरी कश्मकश में चल रहा है मार्केट इस वक्त। टीसीएस सेल जोन पे बने रहिए आप। और फार्मा में सेलिंग आएगी तो वी विल गेट द अलर्ट और जैसे ही अलर्ट आएगा मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। एंड रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स, बंधन बैंक एकदम साइडवेज पूरे दिन से आज ये साइड्स के हिला ही नहीं है। ओके, कमिंस इंडिया में आज देखिए सेलिंग चल रही है, बी ऑन द सेलिंग साइड। निफ्टी में यहाँ पे आपका जो सेलिंग कॉल आ गई है लेकिन सेलिंग परसेंटेज का इंतजार है कि 70 के ऊपर जाएगी एंड देन वी विल जंप इनटू द निफ्टी सेल साइड। सो फिलहाल होल्ड ऑन, हैव सम पेशेंस, डोंट बी इम्पेशेंट इनफ। ओके, बैंक निफ्टी अगेन वंस अगेन साइड ट्रैक 50-50 पे चला जा रहा है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन हियर। Okay, so waiting game, that is the biggest part of being a trader. You can't avoid the waiting game. You have to wait because you have to be sure कि आप जब भी trade लें and a profitable trade लें। Okay, so you don't have to jump into any sort of conclusions. मैं हूँ आपके साथ बना हुआ लगातार लाइव और आपके फेवरेट स्टॉक्स का लाइव विश्लेषण करने के लिए। सो बने रहिए मेरे साथ। और फार्मा में ये देखिए यहाँ पर आपका, जैसे मैं बात कर रहा था कि एक सेल कॉल बनती हुई नज़र आ रही है एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट कंफर्मेशन। हाई कंडीशन तो बनी हुई है स्ट्रॉन्ग, रेड एरो भी यहाँ पे आ रहा है। सेलिंग परसेंटेज इज 90-88। So within a few minutes we should expect within a few seconds I guess we should expect a alert from Trade Genie about a sell zone in auto pharma. Basically as I can see कि पूरे के पूरे आपके फार्मा सेक्टर में we are able to see a sell zone coming in. It's all diving down because Nifty has already come down here and Cummins India is already down. So I have a request for USD INR. So I will open up the USD INR for all the traders who are interested in currencies. And ये रहा USD INR का चार्ट आपके स्क्रीन पर ताकि आप देखें और समझें कि क्या पोजीशन है यहाँ पे आपके USD करेंसी की। And with that note let me open। ओ देखिए, ये देखिए बहुत ही एक रोचक बाइंग मोड है। बाइंग सुपर स्ट्रॉन्ग 85% पे है। इट हैज ऑलरेडी गॉन पास्ट आवर टारगेट नंबर 1। 73.5121 इज द टारगेट 1 एंड आज के दिन का हाई है 73.5350। सो ऑल द ट्रेडर्स इन करेंसी नोट दैट इट इज ऑन अ बाइंग ट्रेंड। USD INR टारगेट्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। बी ऑन द बाइंग साइड। प्रॉफिट बुकिंग जोन ऑलरेडी आ चुका है।
आप अपने पोजीशंस के अनुसार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कीजिए। सो यूएसडी आईएनआर में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बाइंग मोड बनी हुई है। रिमेन ऑन द बाय साइड, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, विल कम बैक टू इट। आई थिंक वी आर एबल टू सी, काफ़ी देर से यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेल आने की कोशिश कर रहा है एंड इट इज़ जस्ट गेटिंग स्किप्ड ड्यू टू सम रीजन। सो आई थिंक आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए एंड वी शुड सी अ नाइस फॉल राउंड हियर। निफ्टी में यहाँ पे हल्का आप देख सकते हैं कि सेल आ चुकी है, दो सेल जोन शुरू हो चुका है, दो एरोज, सॉरी रेड एरो एंड दो हाई कंडीशन कैंडल। ऑल वी आर वेटिंग फॉर इज द थर्ड सिग्नल सेलिंग परसेंटेज टू गो बियॉन्ड। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे एरो आया है लेकिन अभी भी सेलिंग परसेंटेज बना हुआ है 53 पर। बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं 50-50, सो दे आर टेकिंग द मार्केट कंप्लीटली टू अ साइडवेज स्टैंड। कोई डिसीजन नहीं बन पा रही है, कोई ओपनिंग यहाँ पे अच्छे से नहीं मिल रही है। देयर इज नो स्ट्रॉन्ग फेवर फॉर ईदर बाइंग और सेलिंग साइड। तो कशमकश चल रही है मार्केट में। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टाइम गाइज, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल, नॉट टू जंप इन, नॉट टू गिव इन टू योर इम्पल्स और योर इमोशंस। स्टे स्ट्रॉन्ग। हम प्रॉफिट लेंगे लेकिन जहां हमें प्रॉफिट मिलेगा या जहां हमें ट्रेड जीनी बताएगा। वी आर नॉट गोइंग टू सिंपली टेक अ ट्रेड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ओके, सो आप यहां पे जो है बने रहिए मेरे साथ, ओके, एंड वी विल सी समथिंग ग्रेट हैपनिंग as per the options that we get to see. Okay, so don't be in a hurry, don't be in a impulsive mood. You can shoot your questions live on the chat, you can shoot your questions on the number given on your screen so that I can help you and understand and show you the live levels of your favorite stock, of any of the stock from your portfolio, and we will definitely go and do some good things about it. ओके, सो आप बने रहिए यहाँ पर, पूछते रहिए, देखते रहिए एंड डोंट टेक अ हैस्टी स्टेप। ओके, एनी स्टेप दैट यू टेक शुड बी अ प्रॉफिटेबल स्टेप और एल्स इट्स बेटर टू सिट क्वाइट। कुछ ना करने के नुकसान करने से कुछ ना करना बेहतर। ओके, ये है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान और इसी ट्रेडिंग के माध्यम के ज़रिए हम अपना यहाँ काम करेंगे। ठीक है, so let's see how it goes. Everything is currently undecisive. You can see clearly that not a clear picture in the market. Very 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 choppy market going on right now, because जैसा मैंने कहा कि आपका जो यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई थी आज, it was completely mixed and उसका साफ साफ रिजल्ट हमारे स्क्रीन पर अभी देखने को मिल रहा है कि our current markets are also in a dilemma, in a mixed direction कि कहाँ जाएं, and that's why buyers and sellers, both of them pulling the price this way that way, and price basically कहीं नहीं जा रही है. Similar number of buyers and similar number of sellers are there in the market right now, and it's not able to identify the right trend. So उस वजह से आप देखेंगे कि जो प्राइस एक्शन है वो स्टेबलाइज्ड है, वहीं का वहीं है.
ओके आज का दिन ऑलमोस्ट ऐसे ही रहा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के लिए और इंडेक्सेस के लिए, कहीं कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि यहाँ पर अगर इट्स ऑलरेडी 2:15, सो एक 45 मिनट्स का टाइम है हमारे पास, तो मार्केट क्लोजिंग्स तक इफ़ वी आर एबल टू सी सम गुड ट्रैक्शन in a good direction, it will be a favorable and a profitable day। नहीं तो अगर ये मार्केट इसी तरह फ्लैट चॉपी रहा तो इट इज़ गुड कि हम ट्रेड, बेटर नॉट टू ट्रेड एंड मेक सम goofy mistakes। okay, that is my point and we will stick to that point। Tata Chemicals, USD INR, it is very strong। आप देख सकते हैं अराउंड 95% बाइंग पे। और ये एक अलर्ट आया है मुझे MCRO यानी कि क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल में यहाँ पे देखिए आपकी सेलिंग शुरू हुई है, यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड जोन आया है, सेलिंग प्राइस भी आई है, टारगेट्स भी आए हैं एंड सेलिंग इट एट अराउंड 69%। सो बने रहिए आप, अभी शुरू हुआ है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल एंड ऑल द ट्रेडर्स हु आर traders in crude, they can note the price here। So we have something amusingly different coming up here। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस आई, और जब तक सेलिंग प्राइस आई आप देख सकते हैं कि वी कैन सी अ बेरिश बुलिश कैंडल फॉर्मिंग अप, और बाइंग परसेंटेज जो है आपकी यहाँ पर 78 तक चली गई है और सेलिंग परसेंटेज कम हो गई है। तो 22% की सेलिंग हो रही है यहाँ पर, बाइंग हो रहा है 78 का। सो वंस अगेन द मार्केट इज़ नॉट डिसिसिव एट ऑल। बैंक निफ्टी को देखिए आप, 94% की यहाँ बाइंग चली गई है, 6% की सेलिंग। थोड़ी देर पहले यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग अ सेल जोन बिकॉज कपल ऑफ टाइम्स इट वाज फ्लैशिंग अ रेड एरो, so it could not sustain that selling momentum, and right now as you can see it is already going beyond the point। ओके सो ये देखिए आप धीरे धीरे तो बैंक के जो सिस्टम्स हैं और यहाँ पे जो आपका मोड है ट्रेड का वो लगभग चेंज होता हुआ। So we will just see how exactly this is faring up, okay, and if it's able to sustain buy momentum in bank nifty, well and good, nothing like it, okay, and if not, so what happens next, okay, what exactly do we have in for our storage here। निफ्टी में यहाँ पे देखिए आपके सामने बना हुआ है चार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मार्केट आज का, बिकॉज इट इज़ एक्सिस बैंक ऑन इंट्राडे। मिस्टर संतोष कुमार, एक्सिस बैंक के लिए इंतज़ार। देखिए एक्सिस बैंक में हमारा जो बाय कॉल है वो है परसों से बना हुआ है बाय कॉल। आज दिन भर ये बाय मोड में रहा, लेकिन अभी मैं कहूँगा नो, बिकॉज अभी जो मेरी हालत है यहाँ पर बाइंग परसेंटेज तो है लेकिन यहाँ पे रेड कलर की हाइकनिशी बनी हुई है। सो मार्केट इज़ वेरी चॉपी एंड अनडिसिसिव। सो आपको मैं कहूँगा थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ओके, बिकॉज यहाँ पे एक एक मिनट में मोमेंट में यहाँ गेम चेंज हो रहा है, बिकॉज it's not able to take a decision। So straight answer is no, right now do not take a buy call for Axis Bank फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि ट्रेड जीनी की तीनों कंडीशन है आपके सामने। यहाँ पे निरंतर जो है रेड हाइकनिशी बनी है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फुलफिलिंग अवर थर्ड कंडीशन।
बाय कॉल है, लेकिन बाय परसेंटेज है, लेकिन मेरा यहाँ पे रेड हाई का निशी है, तो मैं यहाँ पे बाय अलाउड नहीं करूँगा। तो आपको ज़रा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इंतज़ार करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या एक्शन आता है। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। सो जस्ट गिव अस अ फ्यू मिनट्स, बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ इंसाइट्स मिलेंगी, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जैक्टली ये जो बाइंग ट्रेंड आई है, इज इट गोइंग टू सस्टेन और नॉट, और इज इट जस्ट अ फ्लूक। ओके, सो वॉट एवर इट माइट बी, हम बने हुए हैं यहाँ पर, मैं निरंतर देख रहा हूँ। सो बाइंग ट्रेंड के आने से पहले भी हमें यहाँ पे बाय कॉल का इंफॉर्मेशन आना चाहिए, हमारी कंडीशंस मैच होनी चाहिए बेसिकली। और जब तक हमारी कंडीशंस मैच नहीं होती, जैसा मैंने कहा, हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। बैंक निफ्टी once again stronger 94%। निफ्टी में सेल कॉल आई है, लेकिन बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हिच वी हैव पुल्ड द प्राइस अप राइट नाउ एट 11,915। एंड उस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये कॉल जो है हमारे ट्रेड जीनी की, वी आर लुकिंग एट इट। Hi sir, hi Mr. Shiva. Bear tail. That's a nice one. Yep, give me a minute. I am going to show you Mr. Shiva, the shorting specialist. I think we are having some kind of a technical issue with the network connection. I really apologize for that. As I told you, due to the immense and hard rain in Hyderabad, we are facing this issue of intermittent disconnections and problems with power and internet. So please forgive me for this interruptions.
So just a moment, I'm just trying to check. The network has gone down very low. आपको रुकावट के लिए खेद है, इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कनेक्शन इश्यूज चल रहे हैं हैदराबाद में एंड आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली जज इट. सो 1 सेकेंड, आई विल कम बैक टू इट. येस, आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक. सो येस, भारती एयरटेल की रिक्वेस्ट की है मिस्टर शिवा ने. सो आई विल शो यू भारती एयरटेल. 1 moment please. And here we go, Bharti Airtel ऑलरेडी ऑन डेज हाई, जिसमें बाइंग टारगेट्स खत्म हो चुके थे हमारे ऑलरेडी, दोनों के दोनों टारगेट्स खत्म हो चुके थे. सो टू आंसर योर क्वेश्चन मिस्टर शिवा, नो, राइट नाउ आई वुड नॉट recommend you to short Bharti Airtel because it is not giving us a right direction about the selling side. We are on a buy side since morning, but the sellers at around 36%, so very few sellers. So taking a short would be a very risky proposition here. So I would recommend you not to do that because Trade Genie doesn't allow us to do that. So if at all there is something comes up, I will do let you know. But till then, hold on and we will look into some other stocks जहाँ पे हमें कुछ बढ़िया ऑप्शन मिलेगी. So yes, Mr. Mukesh has given us an insight over here stating that VIX is nothing but the Indian Volatile Index. And if people are not aware of that, I'll just give you a simple information about VIX. VIX is nothing but it shows the index of volatility on basis of people's sentiment. If the volatility increases, then you will see the price action happening in a very in a very distractive manner, and that is what exactly is happening right now, because there is no concise direction in the market, because the volatility is increased and the fear among the people or the investors is uncertain. So there are chances of people giving us a buy or a sell and they are not in a decisive mode. So जब VIX बढ़ता है तो definitely volatility increase हो जाती है. So that is why looks like there is some sort of announcement nahi, I think there is some sort of PM speech today 6 p.m. So people are waiting for some sort of action and they are having some kind of fear in their minds. Okay, so that could be the reason that the traders are not getting a proper momentum here, and based on that the market is giving you that reflection without any direction. Yes, that could be a factor that people are really undecisive and not able to pinpoint the exact direction, because PM Modi to address the nation at 6 p.m. Okay, so let me just check if there is any potential news or is there any kind of a potential information that might help us in judging this day. So I think that holds good, because whenever Mr. PM Modi comes into the news to address the nation, that shakes up the root of a lot of people, a lot of institutions, business or whatever it might be. Okay, so that carries a lot of weightage here. Okay, that carries a lot of stuff. Okay, so in that aspect definitely I can say yes, we would have to give it its due due and ensure that कि जो भी न्यूज़ वहाँ पे पीएम मोदी जी एड्रेस करेंगे उसका जो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट हो या कोई भी इफेक्ट हो, we should be able to properly gauge that. So I think that could be the major reason here why the entire market since afternoon has fallen into a non-decisive track and a complete sideways motion. So no proper trading happening or no proper direction of the market. So as I've been telling you since last 1.5 hours, you have to be very careful in such markets. I think it's better, because Trade Genie is not allowing me to take any positions in any of the stocks that I'm picking right now. Okay, bearing a few, Power Grid आप देखें सवेरे से strong sell पे है, और बाकी अगर मैं कोई किसी भी स्टॉक को देखूं जहां पे मुझे अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाने का मन भी कर रहा हो, लेकिन ट्रेड जीनी मुझे कहीं से भी अलाउ नहीं कर रहा. ओके, बिकॉज जो पोजीशन, जो स्टॉक्स की जो हमारी कंडीशन है, तीनों कंडीशंस कहीं भी यहाँ पे जो है मैच नहीं हो रही हैं. That clearly means that you should be out of the market, not taking up positions and not making some stupid decisions and end up losing money. Okay,
सो टाटा केम, मैंने दोपहर से 2 बजे से कहा था कि ये देखिए 1:30 बजे से कहा था बढ़िया स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, बाय कॉल 95% ऑलमोस्ट टचिंग द टारगेट्स, सो मेंटेन दैट। और ये देखिए यूएसडी आईएनआर, आई जस्ट टोल्ड यू वेरी स्ट्रॉन्ग 94% बाइंग साइड पे है, सो एवरीबडी ट्रेडिंग इन करेंसी शुड बी ऑन द बाइंग साइड एंड मेक सम फैबुलस मनी आउट हियर इन यूएसडी आईएनआर। Indexes, Nifty and Bank Nifty, still not decisive, completely sidetrack, and we can see that it is not giving us a decisive positions here. I'm just trying to find out and read what is the agenda or what are the things that our Mr. Modi has to talk about today. Yeah, so it looks like the PM Modi did not specify about the notions or the things that he used to talk, but the speculations are that his addresses could be to the coronavirus situation on the verge of festivals across India. So yes, we are, as I told you yesterday, that we are entering the festival zone, festival season of India. Dashera, Diwali, Navratri, back-to-back things are coming up in the month of October and November. So I think that could be the main agenda, because currently we have around 75,97,000 coronavirus active cases in India. Okay, and so this could be a word of concern for the PM to address ki how exactly we have to maintain a safety in the time of festival season. So that is a speculation here. So we will keep an speculation here. So I think people's sentiments and emotions are triggered with PM Modi's speech, और उस वजह से आप अगर देखें और मार्केट जो है एकदम टेढ़ी मेढ़ी दिशा बनी हुई है. So yes, thank you Mr. Mukesh Kumar Vatla. You have given me a very vital point and information which I could talk and tell my viewers that yes, this is one of the major reason that we could see that there could not be a good action in the stock market today in the afternoon session, and the impact of the European markets which opened up in mixed signal also carried this notion forward. So yes, बिल्कुल सही कहा. बहुत बहुत शुक्रिया श्री मुकेश जी आपका इस इन्फॉर्मेशन का. और मैंने अभी न्यूज़ देखी और न्यूज़ पढ़ रहा हूँ मैं, तो उस बारे में साफ मालूम चल रहा है. और ये तो सभी जानते हैं कि जब भी मोदी जी आते हैं देश को संबोधन करने के लिए, तो उस दिन मार्केट कुछ ना कुछ रुख लेती ही है. तो आज का रुख है, क्योंकि ये आज उनका संबोधन 6 बजे का है, यानी कि मार्केट ख़त्म होने के बाद. सो पीपल आर completely unaware of what kind of things he's going to talk. So that is being reflected on the market right now. Okay, so anyways, that was a good information that cleared a lot of doubts ki why is that thing happening here, and we will stick to it. आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे पीएम मोदी जी, तो हम ज़रूर जुड़ना चाहेंगे. और उस वजह से we are seeing that there is no proper action in the market today and it is going flat. So it's better that okay, no problem, we can take this with a pinch of salt कि market अगर flat है तो ट्रेड जीनी तो पहले ही कह रहा है आपको कि आप कोई भी स्टॉक में उठा के देखूं तो वहाँ पे मुझे कोई भी डिसिसिव नज़र नहीं आ रही है, ऑल साइडवेज है. सो जैसा आप अच्छे से जानते हैं कि जब साइडवेज होता है तो इट्स बेटर टू कीप आवर माउथ शट, hands close to our bodies, and don't trade unnecessarily and lose your money. Okay, that's the idea here. I will just have the Nifty opened here for you, and आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी भी मैं लगाता हूँ. देखिए साइडवेज डायरेक्शन जा रही है, कैंडल बाय कैंडल around 10:30 11 o'clock onwards. Bank Nifty has been consistently, it is doing the sideways track. बिल्कुल भी आपको मौका नहीं दिया है
ट्रेड लेने का, और ट्रेड जीनी ने लगातार आपको बता दिया है कि भाई यहाँ कुछ बात बनती नज़र नहीं आ रही है। बाय जोन है, सवेरे से बाय जोन है, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग परसेंटेज है हमारा, वो निरंतर जो है साइडवेज दिशा में ही रहा है। निफ्टी यहाँ पे देखिए अब सेलिंग की तरफ जाता हुआ। टारगेट्स नोट कर लीजिए आप। निफ्टी में सेल कॉल आई हुई है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी ऑन द सेलिंग साइड, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन द सेलिंग साइड you need to know the targets. Time is 2:35 p.m. and we are halfway mark, close 30 minutes there for our market to close, square of positions to start. 3 बजे का समय होता है, ओके और आपको पता है कि 3 बजे के बाद हमारे कुछ रूल्स हैं ट्रेड जीनी के, जिनको हम बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं, फ्रेश पोजीशंस नहीं लेते हैं। सो आज का जो सेशन था बहुत ही डल सेशन था। मैं तो कहूँगा डल बिकॉज क्योंकि आज कुछ स्टॉक्स को छोड़ के बहुत सारे स्टॉक्स, स्पेशली इंडेक्सेस में, आज पूरा का पूरा दिन जो है हमारा साइडवेज रहा। अच्छी बात ये रही कि सिग्नल्स हमारे ऐसे थे कि हमारे बहुत सारे स्टॉक्स में हमारे तीनों कंडीशंस मैच नहीं हुए, और ट्रेड जीनी के यूज़र्स और स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स जानते हैं। जी हाँ मिस्टर मुकेश, 2 दिन से डल, मंडे का सेशन भी डल था, ऑलमोस्ट डल था, बट yesterday it was somewhat profitable because Bank Nifty and Nifty gave us some targets and we were able to make some good money yesterday, but not that great जितना होना चाहिए। वो तो मैं that definitely I will give it to you, and today it has been a completely dull day. There could not be anything worse than a dull day, okay, because when it's a choppy and a sideways market, it is very risky and it becomes very critical for you to be on the right side. Basically on the right side in these kind of market, it's away from the market, out of the market. Save your capital because tomorrow is again Wednesday, and as I say, Wednesday and Thursdays are the most important days where you get to make some serious money, okay. I love Wednesdays and Thursdays, and most of my trader people community love Wednesdays and Thursdays, okay. So I really hope कि आज का जो सेशन है वो आज ही ख़त्म होगा, and we should not be seeing this dull moment tomorrow. So I have the Nifty and Bank Nifty charts on your screen because that is what we can see right now, and that is what is the scenario. 50-50 everywhere, and complete opposite, no direction in the market, very dull, very low action happening. And in these times, Grasim, I have given a buy call, so maintain that buy zone for Grasim, be on the buying side. So if you have already made these positions, I can show you those stocks. Glenmark, buy side, note the targets, be on the buying side, and as per your convenience, as per your investment and your lot sizes, you can definitely book your profits and exit, because I don't think we should be expecting a huge action from this point onwards because of the reason we just specified. So it is not safer, or it is not smarter enough way to lock your money out there and keep waiting for things to happen, because I don't think we should be expecting anything. But anyways, we are watching the market, we are watching Trade Genie on our screen, and we are talking based on the signals that we see, okay. We are not talking some random words out here.
हम देख रहे हैं कि सिग्नल्स यहाँ पे क्या हो रही हैं. Yes, Mr. Suresh, this is something which I have been trying to read since last couple of days. That entire global cues is running on a downtrend and Indian market is running on an uptrend. So let's not talk about a trap, because even if it's a trap and if you follow that trend properly, you will still make money, right? So a trap is for the people who get trapped on the wrong side. So just assume it this way: if somebody is running this trap, if it's showing you a buy trend since last 2 weeks, so you be on the buy trend, right? आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ट्रैप है कि नहीं. और कल से अगर से फॉर एग्जांपल सेलिंग शुरू होती है, यू बी ऑन द सेलिंग साइड. So wherever the market goes, you follow the trade genie or you follow a very good application like this, and it shows you right good signal, and you follow that and you end up making money. Market can go either up or down. It's a good thing if it goes up. It's a good thing if it goes down. It should not be dull like this today. Okay, it should not be a sideways, because when it is sideways, that's a very idiotic thing to happen, and that's a very tough thing to control. If it's going up, let it go up. Okay, you be cautious. You need to know the levels, you need to know the targets, and you need to know what exactly your return of interest is. Okay, how much expectations you have from the market. Depending on your investment, you get that much amount of money on a daily basis and you come out. So let's keep a very clear head that we being a retail traders, we don't have to worry about the big traps. All we need to care is, are we on the right side or not? Let it be upside or downside. Being on the right side on the right time is what makes all the difference, and that is the reason why I'm here to show you and tell you on a daily basis with Trade Genie कि आप ट्रेड जीनी के साथ रहोगे, ट्रेड जीनी के यूजर्स की तरह आप सिस्टम को यूज करोगे, तो आप सही साइड पे ही रहोगे. मार्केट में चाहे ट्रैप हो, बेरिश हो, बुलिश हो, आई थिंक आई डोंट हैव टू केयर अबाउट इट. You're most welcome, sir. Yes, and that is the very simple mentality we should be having when we are trading, when we are trying to be a day trader, that I can't control the market, so why should I worry about the market, right? Because let it go wherever it want to be. I want to be on the right side. I need to know आज कहाँ जाएगा, targets क्या हैं, levels क्या हैं, right? As long as I know that I'm safe, as long as I am able to make the money from my investment, I am safe. Or expectations from your investment and returns for your investment should be realistic. Okay, जब तक आपकी ये realistic thoughts रहेंगी, you are always on the winning side with Trade Genie. If you start having unrealistic expectations and returns, you are bound to get doomed. Yes, Mr. Shiva Prasad, Oro Pharma short. Yes, Shiva, you can take a look at the screen. Oro Pharma is definitely on the selling side. टारगेट्स नोट कीजिए आप. सी इट वाज 798. राइट नाउ इट जस्ट स्पाइक्ड अप, एज यू कैन सी, बुलिश कैंडल. और अभी देखिए यहाँ पे 78% की स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है. तो टारगेट्स नोट कीजिए. यू कैन डू द शॉर्ट हियर. Note down the target. 792 and 787 is target 1 and target 2, and as per your convenience and your lot size, you can definitely start booking your profits. But as I said, today being a very nasty day, a dull day, or a sideways day, please be careful. Okay, please be cautious enough to understand what the market is going through right now. So take your decisions accordingly. कि आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है. और आज का रिपोर्ट आया है कि जैसे कि बताया कि मार्केट इज गोइंग वेरी वेरी वॉलेटाइल. एंड लेट मी जस्ट क्विकली चेक द विक्स इंडेक्स, तो पता चल जाएगा. तो उस हिसाब से आपका ट्रेड लेना लाजमी है कि नहीं, तो सावधान होके आप काम कीजिएगा. मैं देखूं यहाँ पर इंडिया विक्स इज एट अराउंड 22.58. ओके, और मैं इंडिया विक्स का अगर चार्ट देखता हूँ तो यस, इट इज़ ऑन अप ट्रेंड, and definitely it shows that the volatilities has increased since last 2-3 days. Okay, so we have to be careful, because we can't blame others after if anything goes wrong. So yes, Shiva, I would request you to have some patience.
let's wait for a few more minutes before we get into this day of trading, because देखिए nothing seems to be going around anywhere in any of the indexes, so why to take a chance? Is better to be safer than to be sorry. Okay, बेयरटेल, अगेन बेयरटेल के लिए भी मैं यही कहूँगा, भारतीय एयरटेल के लिए आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे एक सेलिंग शुरू हुई है, रेड एरो आया है, रेड हाइकनिशी है, selling percentage slowly it is going up. So yes, your choice of stocks is good, and again immediately we got an alert, we got the price. बात करते करते यहाँ पे टारगेट्स भी आ गए हैं, सेलिंग परसेंटेज को ऊपर जाने का इंतज़ार कीजिए. तो आई थिंक करेंटली इट इज़ एट 64%. okay, so very tricky, very dicey. I would suggest you to have some patience. We are not seeing any decisive directions in the indexes, so आपको यहाँ पे हर कदम फूंक फूंक के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टॉक किसी भी तरीके से मतलब जो है एक डेसिसिव मोड में नहीं है. तो उसके चलते मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई भारी गलती करें और उसका भुगतान आपको लॉस से करना पड़े. ठीक है, सो इंतज़ार कीजिए ज़रा सा, अगर कहीं भी मुझे कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नज़र आएगी, जो कि 246 हो चला है टाइम. ओके, एंड आई एम येट टू सी strong stuff. Nifty and Bank Nifty, both of them again going sideways. Okay, so sideways pose hai, so it doesn't make any sense to just try and test it. Why do you want to do that? Why do you want to invest, get into this puddle right now and lose some money just for the sake of it? Okay, तो एयरटेल और औरो फार्मा में यहाँ पे हमारे दोनों में जो है हमारा सेल कॉल है, मेरी नज़र बनी हुई है दोनों के ऊपर. एक्सिस बैंक में भी यहाँ पे हमारा सेल कॉल है, सॉरी बाय कॉल है, लेकिन 50-50 नॉन डिसिसिव. बंधन बैंक 50-50, ओके, नॉन डिसिसिव. So I think it's better to sit quiet and watch the proceedings rather than invest your money and get your heartbeat raised. Okay, ऐसे मार्केट में ट्रेड करने का कोई मज़ा नहीं आता unless you really want the kick of getting stressed out. I don't think anybody would like to do that. So it's better not to do it and not to have that extra pressure, because कहीं भी कुछ भी हो जाएगा तो क्यों. जब तक ये देखिए निफ्टी 50-50 में है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आपका कुछ खास काम नहीं कर रहा है. पूरा दिन आप देख सकते हैं, मैं एक लाइन बनाता हूँ जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन. आज 4446 इसी प्राइस रेंज में आज जो है ये डांस करता रह गया. $4,446 एंड 4,300 के बीच में ही आज ये डांस करता रह गया. So it was completely a lackluster day for Bank Nifty, complete sideways. Nifty also almost sideways. So to answer your question, please wait. 250 is the time, and almost the market getting closer to getting the closing bell, and yeah, to sum it up, it is a boring day in terms of trading because कुछ मज़ेदार बात बनी नहीं. No. Completely कहीं नहीं हिल रहा है. I don't think there are anybody
taking any trades right now or what? It's just stagnant there. एकदम रुका हुआ सा हमारा बना हुआ है मार्केट एंड वी आर एबल टू सी वेरी लेस प्राइस एक्शन. जो प्राइस वहीं के वहीं है, रुके हुए हैं. सो बेसिकली एवरीबडी इज वेटिंग फॉर पीएम मोदी टू से समथिंग. सी सेल कॉल होने के बावजूद भी शिवा, इफ यू आर वाचिंग दिस, Oro Pharma and Axis Bank and Airtel started moving upwards. Okay, that is what I have been telling you. I really hope that you did not do a trade because जैसे मैंने बताया कि मार्केट इज completely undecisive और इस वक्त तो कोई ट्रेड बनती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. 250 इज अ टाइम और 1:30 बजे से ही मार्केट ने आज बहुत ही बेरुखी दिखाई. आज एकदम रूठा हुआ सा लगा मुझे मार्केट और उस वजह से यहाँ पे आज दोपहर में हमें कोई भी बढ़िया एक्शन देखने को नहीं मिला. तो कोई बात नहीं, इट हैपन्स, इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, सो यू कांट एक्सपेक्ट एवरी डे टू बी अ बम्पर डे. ओके, बट द लर्निंग हेयर इज दैट irrespective of whatever day and whatever things happen, we should be on the right side, and Trade Genie will always let you be on the right side. And that is the reason I am coming here on a daily basis to ensure all my students, clients and users and viewers stay on the right side with Trade Genie. तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स एंड communities so that you can join with me on a daily basis where I'll teach you, show you the live levels of your favorite stocks, help you earn money on a daily basis, share the best practices of trading, intraday trading, and help you become a professional day trader. Okay, you don't have to read books, attend seminars, spend money and hours of time. You just need to know some simple basic topics, and with those basics in your mind and a tool like Trade Genie in your hand, you will always be on the right side. So don't forget to join me every day 9:15 a.m. on Monday to Friday on the same channel. Please do like and subscribe so that you get to and hit the bell icon ताकि आपको every update की notification मिले और आप बिना समय गंवाएं आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकें.
बैक अगेन ऑन योर चैनल। सो जैसा मैंने बताया कि यहाँ अभी तक मुझे कोई भी बढ़िया हलचल नहीं मिली है और ना ही मुझे फ़िलहाल कोई उम्मीद है, बिकॉज मार्केट ने वो डायरेक्शन पकड़ लिया है। पीपल हैव ऑलरेडी गॉट दैट इन देयर माइंड्स एंड हेड, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। इट्स ऑलरेडी 2:57 PM, ऑलमोस्ट देयर क्लोजर टू द क्लोजिंग टाइम। सो यहाँ से कोई आपको फ्रेश पोजीशन बनाने की ज़रूरत है भी नहीं और आपको चांस मिलेगा भी नहीं फिलहाल, एटलीस्ट आज तो नहीं मिलने वाला, बिकॉज आज जो मार्केट ने आफ्टरनून सेशन में रुख पकड़ा है वो है आपका साइडवेज ट्रैक का, एंड इट हैज़ कम्प्लीटली gripped the entire market in its sideways direction. Okay, so there is no action happening, not decisive. People are stuck on their prices, buyers sellers having a tiff, no majority. और जहाँ मेजॉरिटी है वो भी देखिए आप, यहाँ पे बर्जर पेंट में 91% की बाइंग है, बट द प्राइस इज नॉट मूविंग एट ऑल. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स दैट वी हैव हियर दैट हैव सम ट्रैक्शन, बट देयर इज नो मूवमेंट हैपनिंग. ओके, तो वो भी आपको देखना है और समझना है ताकि आपको ये गलती ना करें और आप अटके ना रह जाएं. इसके चलते अब वक्त हो चला है हमारा कि मैं आज का ये शो यहीं रैप अप करूं, और रैप अप करने से पहले आपको आज दिन का एक कंप्लीट समरी दे दूं. आज के दिन की कंप्लीट समरी ये है कि निफ्टी में वी हैड अ बाय कॉल इन द मॉर्निंग, एक्चुअली फ्रॉम लास्ट 3 days, और वही बाय कॉल आप देखिए मोमेंटम बरकरार रही. ओपनिंग हुई थी 11,847 से, और जो डे का जो हाई था वो था अराउंड 11,940. ओके, 840 से 940, अराउंड क्लोज टू 90 प्लस पॉइंट्स आज आपको निफ्टी में दिए हैं. उसके बाद आफ्टरनून सेशन में इट कम्प्लीटली वेंट फ्लैट. सो इट वाज ऑन एंड ऑल अ फ्रूटफुल मॉर्निंग सेशन फॉर निफ्टी. वी हैड अराउंड 90 प्लस 80 प्लस पॉइंट इन द मॉर्निंग. बैंक निफ्टी में भी आप देखिए आज वी हैड अ स्मॉल स्टिंट ऑफ अ रेड एरो, लेकिन वहाँ पे मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ एंड वी हैड अ बाय कॉल, एंड बाइंग प्राइस 24398 थी. लेकिन आज दिन भर का जो हाई है 24,445. So basically it went nowhere. So bank nifty was really dud today, complete sideways entire day. There was no movement at all. So definitely there's nothing much Trade Genie could do except of telling you that to stay away from the market. Airtel had a very good day. 15 plus points we made. Bumper targets were achieved in the morning, and before the pre-afternoon session both the targets were met. औरो फार्मा में बाय कॉल आई थी एंड वी गॉट अराउंड 798 पॉइंट्स से ओपनिंग के साथ वी गॉट अराउंड 10 पॉइंट्स टुडे. सो आफ्टर दैट अगेन फ्लैटिश मार्केट. एक्सिस बैंक में कंप्लीट फ्लैट, देयर इज नथिंग कुड डू. गोल्ड में देखिए आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिलहाल आपको जो बाय कॉल मिली हुई है, तो जाने से पहले फटाफट आप गोल्ड के टारगेट्स नोट कर लीजिए. 50,874 इज टारगेट 1 एंड 50,970 इज टारगेट नंबर 2. सो प्लीज़ टारगेट नोट कीजिए गोल्ड के बढ़िया बाय सेगमेंट के, ताकि आप यहाँ पे गोल्ड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर निकालें मेरे जाने से पहले. सो क्विकली नोट डाउन द टारगेट्स फॉर गोल्ड, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी सुपर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गोल्ड में बाइंग चल रही है. बंधन बैंक कंप्लीट फ्लैट डे टुडे. बर्जर पेंट्स में भी आज कुछ खास एक्शन नहीं था. एंड पावर ग्रिड में येस वी मेट टारगेट्स, ब्यूटीफुल टारगेट्स. स्मॉल स्टॉक स्मॉल टारगेट बट येट अचीव्ड. एंड पीपल हु ट्रेड इन पावर ग्रिड, इनको पता है कि एक एक लॉट में भी अगर आप काम करते हो तो आपने बढ़िया प्रॉफिट निकाला है आज पावर ग्रिड से. आज यहाँ पे हमारा 2 से 3 पॉइंट का टारगेट मिला है पावर ग्रिड में. TCS में येस वॉज अ गुड डे. वी मेड अराउंड 2720 was the opening, and buying price के बाद high was 2759. 40 points. TCS gave us around close to 35 plus points in the buying segment. बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग किया आज ट्रेड जीनी यूजर्स ने. ग्रासिम स्टिल ऑन द बाइंग साइड, सेलिंग साइड में भी काफ़ी नीचे गया था. ग्लेनमार्क बाइंग मोड पे है, सुबह से बाइंग मोड पे है. 479 और आज का जो हाई था वो है 486. सो क्लोज टू 5 पॉइंट्स आपको दिए हैं आज ग्लेनमार्क ने.
टाटा केमिकल्स ने देखिए बाइंग में आज बढ़िया दिया है परफॉर्मेंस आपको, अराउंड 315 एंड हाई इज अराउंड 324। सो आपको कम से कम 6 या 7 पॉइंट आपको टाटा केमिकल्स ने दिए हैं आज। यूएसडी आईएनआर ने भी बढ़िया पॉइंट दिए हैं बाय मोड में आफ्टरनून सेशन में, टारगेट 1 अचीव हुआ है। So all in all, it was a mixed day today. I would not say a great day. I would not say a bad day, considering that the few stocks which we talked about, ट्रेड जी ने उनमें से 70+% केसेस में हमको टारगेट अचीव कराया है। रोज़ाना ये 85 to 90% होता है, स्पेशली इन इंडेक्सेस, लेकिन आज का दिन काफ़ी डल था। ग्लोबल क्यूज, एशियन मार्केट वॉज साइडवेज, यूरोपियन वॉज साइडवेज, एंड जैसा कि मैंने कहा कि पीएम मोदी इज़ गिविंग अ स्पीच एट 6 PM, और उस वजह से वॉलेटिलिटी इंडेक्स वाज अराउंड 22.7 एंड दैट टुक द मार्केट टू अ कंप्लीट साइडवेज ट्रैक बिकॉज investors are fearful in mind what could be the new decision being done. So people have retracted their money, not invested, not at all traded. Prices remain the same. Okay, most of the prices remain the same because there was no transaction happening. Okay, because people are anticipating what is the new stuff or new news PM Modi could say, and that could impact tomorrow's market. So tomorrow is going to be a very exciting day. Don't forget to join me tomorrow at 9:15. Tomorrow I'm going to stay with you the entire day and we're going to talk a lot of stuff because Wednesday and Thursday बढ़िया एक्शन होता है। ट्रेड जीनी आपको ज़बरदस्त कमाई देता है वेडनेसडे और थर्सडे के दिन, वैसे देता तो हर दिन है लेकिन वेडनेसडे और थर्सडे मस्त काम होती है, तो कल का दिन बहुत मज़ेदार रहेगा। डू जॉइन मी टुमारो एट 9:15. Don't forget to share this video, like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you get all my notifications right on time. So till then, tomorrow, see you again. Have a great day. Be safe. Happy trading and enjoy the today's income.